So this is Act 1, Scene 1, Part 2nd. Selenio, here comes Bassanio, your most noble kinsman. Crescenio and Lorenzo, fare you well. We leave you now with better company. So later in the scene, Bassanio enters the play. Here Selenio is कंसिडरिंग बसेनियो एज एंटोनियोज बेस्ट फ्रेंड. तो इसमें क्या होता है, इससे पहले के सीन में यही होता है कि एंटोनियो बहुत सैड हो रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसकी सैडनेस है क्या असलियत में, और सलेरिनो और सेलेनियो उसको वेरियस रीजंस दे रहे हैं. और इस प्ले में बसेनियो के साथ क्रिशेनियो और लॉरेंजो भी आते हैं. तो अब सलेनियो बोलता है कि अब तुम्हारे पास बेटर फ्रेंड्स है, तो हम अब चले जाते हैं. मतलब सलेनियो ने बोला ये, और थोड़ी ही देर में सलेरिनो और सलेनियो एग्जिट कर जाएंगे सीन में. Salerino, I would have stayed till I had made you merry if worthier friends had not prevented me. तो वो एंटोनियो को बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हें और हैप्पी रख सकता था, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स आ गए हैं तो ये इन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स ने मुझे स्टॉप कर दिया है, यानी मुझे प्रिवेंट कर दिया है. Antonio, your worth is very dear in my regard. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. So here Antonio says that जितना वो बसेनियो, ग्रिशेनियो और लॉरेंजो को पसंद करता है, उतना ही वो सलेरिनो और सलेनियो को भी पसंद करता है. आई टेक इट योर बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट. तो उसमें एंटोनियो सलेरिनो को बोल रहा है, ज़रूर तुम्हारे पास कोई बिजनेस होगा जिससे कि तुम्हें कहीं जाना पड़ रहा है, और तुम एक एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स बसेनियो, ग्रिशेनियो एंड लॉरेंजो आ चुके हैं, तो तुम एक टाइप का एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि तुम्हें अभी जाना है, लेकिन ये जो एक्सक्यूज़ है असलियत में वो तुम्हारा बिजनेस के से रिलेटेड है. Enter Bassanio, Lorenzo, and Crescenio. Salerino. Good morrow, my good lords. Bassanio. Good signors both. When shall we laugh? Say when. You grow exceeding strange, must it be so? So here Salerino says that good morning, all of you, and Bassanio says that when they will have a get together to have fun. And he also tells that all the friends of his are becoming strangers to him. Hearing this, Salerino says that whenever we will be free, we will meet somewhere. And therefore Salerino and Selenio exit. My lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you, but at dinner time. I pray you have in mind where we must meet. Lorenzo is another friend of Bassanio and Antonio, and he's saying that now you have met Antonio, so I will be just meeting you at the dinner time. And therefore Bassanio says, I will not fail you, which means I will not cheat you. सो अब इसमें सलेरिनो और सेलेनियो चले गए हैं और बसेनियो, लॉरेंजो और क्रिशेनियो रह गए हैं. अब इसमें लॉरेंजो भी बोल देता है कि क्योंकि बसेनियो को अपना बेस्ट फ्रेंड एंटोनियो मिल ही गया है, तो मैं डिनर टाइम में इनको मीट करूंगा. अब क्रिशेनियो के बारे में पढ़ेंगे. लेट मी टेल यू दैट क्रिशेनियो इज रियली अ वेरी टॉकेटिव मैन एंड ही ऑलवेज टॉक्स ऑफ स्टूपिड थिंग्स. Crescenio, you look not well, Signor Antonio. You have too much respect upon the word. They lose it that do by it with much care. Believe me, you are marvelously changed. Crescenio says to Antonio that he is worrying too much about the word. He is also telling Antonio that those who spend too much time worrying about worldly matters are never really happy. And he also says that Antonio has so much changed. On this, Antonio says, I hold the word, but as the word Crescenio, a stage where every man must play a part and mine a sad one. So here Antonio is saying that he thinks of the word for what it is. Like he's telling the word is a stage for him and everyone has a part or role to play, and of Antonio it's a sad one. It means a melancholic one. Crescenio, let me play the fool. With mirth and laughter, let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire, Scott and Albister, sleep when he awakes, and creep into the jaundice by being peevish? I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. There are a sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond. तो इसमें ग्रेशेनियो बोल रहा है, अगर एंटोनियो को एक मेलॉन्कली कैरेक्टर प्ले करना है तो ग्रेशेनियो बोल रहा है क्यों ना मैं जोकर का या फिर कॉमिक रोल का, मतलब क्या मैं जोकर का पार्ट प्ले करूं. And the next 3-4 lines are really very important with mirth. Mirth means happiness and laughter. Let all wrinkles come and let my liver rather heat with wine. तो उसमें बता रहा है कि, तो इसमें ग्रेशेनियो बोल रहा है कि क्योंकि मैं एक जोकर का पार्ट प्ले कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं सारी जगह हैप्पीनेस फैलाऊं, और इससे कि मेरे जो ओल्ड रिंकल्स है वो भी आने लग जाए चेहरे में. और इसका मतलब ये है कि जब कोई हंसता है तो उनके चेहरे में रिंकल अपेयर होते हैं. एंड लेट माई लिवर रादर हीट विद वाइन. तो एक एलिजाबेथन बिलीव था कि अ लिवर एनरिच्ड विद वाइन वुड प्रोड्यूस रिच ब्लड एंड दस अ लाइवली पर्सनैलिटी.
तो इसमें ग्रेशियनो बता रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लिवर है वो वाइन पी के हीट हो जाए, क्योंकि अगर वो वाइन पिएगा तो इससे उसका रिच ब्लड प्रोड्यूस होगा, जिससे कि उसकी एक लाइवली सी पर्सनैलिटी रह जाएगी। दैन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स। क्रिस्टियानो इज ट्राइंग टू से दैट कि मॉडिफाइंग ग्रोन्स मतलब पेनफुल साउंड्स से उसका हार्ट कूल हो जाए। उससे अच्छा तो यही है कि वो अपना लिवर वाइन पी के हीट अप कर सकता है और अपनी पर्सनैलिटी बिल्डअप कर सकता है। वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंड सायर कट एन एल्बेस्टर? So here Krishna is trying to say that why should a man whose blood is warm from within, it means inside, sit motionless as a carved statue of his grandfather which is made of white marble? तो उस टाइम में वेनिस के लोग क्या करते थे, एक एल्बेस्टर की मतलब उनके जो एंसेस्टर्स थे उनकी वो मार्बल की एक स्टैचू बनाते थे जो अपने घर के बाहर रखते थे, एंड इट रिमेन स्टिल all the time. Sleep when he wakes and creep into the jaundice by being peevish. I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. There are sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond. Greshenio Antonio को बोलना चाह रहा है कि that why does he appear dull and sleepy during the day? He is behaving like he has jaundice by being peevish. And he also tells that यहाँ पर बहुत टाइप के मैन होते हैं जिनके जो फेस होते हैं वो एकदम स्टिल पॉन्ड की तरह होते हैं. And do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, I am Sir Oracle, and when I ope my lips, let no dog bark. O my Antonio, I do know of these that therefore only are reputed wise for saying nothing, when I am very sure, if they should speak, would almost damn those ears, which hearing them would call their brothers fool. I tell thee, more of this another time, but fish not with this melancholy bait, for this fool gudgeon, this opinion, come good Lorenzo, fare ye well a while, I will end my exhortation after dinner. ग्रेशियनो ये भी बताता है एंटोनियो को कि बहुत सारे एक तो ऐसे पीपल होते हैं जो डेलिबरेटली जानबूझ के साइलेंस मेंटेन करते हैं टू शो दैट दे आर वाइज एंड दे हैव टू क्रिएट एन रेपुटेशन. दे हैव अ सीरियस मूड, और जब भी कोई मतलब उनकी बारी आती है बोलने की, they behave like they are the Sir Oracle, means they are the voice of God, and at that time वो चाहते हैं कि जब मैं बोलूँ तब कोई भी इंसान कुछ ना बोले बीच में. So these are the one type of people, and that's why most of the people are reputed wise for saying nothing because they remain silent. Gratiano also tells that अगर वो एक melancholic bait फेंकेगा river में, bait is a sad kind of sadness. So by throwing that bait, he will be able to catch the fish. But वो बहुत worthless है, वो fish बहुत worthless है, and ये जो लोग होते हैं बहुत साइलेंट, ये दे रिमेन साइलेंट ताकि उनको रेपुटेशन मिले, ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिले. सो दीज आर द अदर टाइप ऑफ पीपल. कम गुड लॉरेंसो, फेयर यू वेल अ वाइल, आई विल एंड माई एक्सॉर्टेशन आफ्टर डिनर. सो ही सेइंग, क्रिस्टियानो कह रहा है कि डिनर के बाद मैं अपनी गुड एडवाइस तुम्हें बताऊंगा. सो दिस shows that Cristiano is talkative. He talks stupid things which makes no sense. But his speech are really very important because most of the questions come from here only. Lorenzo, well, we will leave you then till dinner time. I must be one of these same dumb wise men, for Cristiano never lets me speak. तो वो बोलना चाह रहा है लोरेंजो कि तो डिनर टाइम में मिलेंगे हम. And he is also telling that he is just like a silent dumb person who never speaks क्योंकि Cristiano उसको बोलना ही नहीं देता. Then Cristiano says that, well, keep me company, but 2 years more thou shalt not know the sound of thine own tongue. वो बोलना चाह रहा है तुम मेरे साथ 2 साल और रहो और तब तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे, तुम्हारी वॉइस तक नहीं निकल पाएगी, बिकॉज Cristiano is so talkative कि वो पूरी बातें करता रहेगा and Lorenzo will keep on listening to him. Antonio, farewell, I will grow a talker for this gear. This line means that he will become very talkative in this matter. Grishenio says, thanks, I faith for silence is the only commendable in a neat's tongue dried. He is saying that indeed I appreciate a dried ox tongue. इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक ऑक्स है उसकी कोई टंग नहीं है तो उसमें ये साइलेंस सूट करेगा क्योंकि वो बोल नहीं सकता. सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टूपिड एग्जाम्पल. सो एंटोनियो सेज, नाउ ग्रेशेनियो एंड लॉरेंजो एग्जिट, एंड नाउ एंटोनियो सेज, इज दैट एनीथिंग नाउ? इट मीन्स दैट डज इट मेक एनी सेंस? जो ग्रेशेनियो ने बोला कुछ सेंस नहीं बना रहा था, सो दैट्स व्हाई एंटोनियो सेड दिस. नाउ बसेनियो, Grishenio speaks an infinite deal of nothing, more than any man in all Venice. His reasons are as 2 grains of wheat hidden 2 bushels of chaff. You will seek all day ere you find them, and when you have them, you are not worth the search.
So Bassanio is trying to say here that Crescenio is the most talkative person in all Venice, and his talks are like useless. And let me give you an example. जो ये दो तीन लाइन दे रखी है, सपोज एक बुश है, उसके अंदर किसी ने मुझे बोला मेरी कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज़ गुम हो गई है, सो आई विल ऑल्सो बी ईगर टू सी दैट वैल्यूएबल थिंग। लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि सिंपल सा पेन या फिर एक बुक होगी, तो इट इज़ नॉट वर्थ द सर्च। सो बसेनियो ने एग्जाम्पल दिया कि ग्रिशेनियो की बातें ऐसा है कि वो मतलब बोल तो बहुत कुछ देगा, लेकिन उसमें से कुछ ही कुछ चीज़ें मीनिंगफुल निकलती है, एंड द अदर्स आर मीनिंगलेस। Antonio, well, tell me now what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised of. Tell me of. Now, this scene is really very important because here Antonio and Bassanio discuss about the important matter. तो इसमें एंटोनियो बोल रहा है कि तुम्हें मुझे उस लेडी के बारे में बताना पड़ेगा, वो है कौन जिसको तुम सीक्रेटली मिलने जा रहे हो, मतलब बेलमोंट जो कि पोर्शिया थी। Bassanio, "'Tis not unknown to you, Antonio, how much I have disabled mine estate by something showing a more swelling port than my faint means would grant continuance, nor do I make moan to be abridged from such a noble rate, but my chief care is to come fairly off from the great depths wherein my time, something too prodigal, hath left me caged. To you, Antonio, I owe the most in money and in love, and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts I owe." So here Bassanio says that Antonio, you are aware of everything and nothing is hidden from you. Bassanio एक prodigal person था, मतलब prodigal का मतलब होता है one who spends money lavishly. So he is trying to say that मुझे पता है मैंने कितना अपनी wealth को waste कर रखा है, क्योंकि मुझे एक grand style में रहना अच्छा लगता है। और उसने ये भी बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं ग्रैंड मैनर में रहना बंद कर दूंगा अगर मेरा पैसा चले भी जाए। वो बोल रहा है अगर मेरी वेल्थ चले भी जाए तब भी मैं ग्रैंड मैनर में ही रहूँगा। वो बोल रहा है मैं इतना प्रोडिगल हूँ कि मेरे पास बहुत सारी डेप्थ भी है। वो ये भी बोलता है एंटोनियो को कि आई गिव द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, बिकॉज ऑफ एंटोनियोज लव ही हैज़ द राइट टू डिस्क्लोज द प्लान्स एंड इंटेंशंस. Antonio, I pray you, good Bassanio, let me know it, and if it stand as you yourself still do, within the eye of honor, be assured my wealth, my purse, my person, my extremist means lie all unlocked to your occasions. एंटोनियो बोलता है बसेनियो को कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हें कि मुझे अपना प्लान बताओ, तो और अगर मुझे तुम्हारा प्लान तुम्हारे जैसा अच्छा लगे, मतलब वो बताना चाह रहा है बसेनियो उसको इतना अच्छा लगता है, तो वो बोल रहा है अगर वो जो प्लान तुम मुझे बताने वाले हो वो तुम्हारे जितना फेथफुल रिस्पेक्टफुल है, सो आई एम रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, इवन माई वेल्थ, माई पर्सनल इन्फ्लुएंस, माई रिसोर्सेज, एवरीथिंग. एंड एंटोनियोज रिक्वायरमेंट, I mean Bassanio's requirement is unlocked. Bassanio's, in my school days, when I had lost one shaft, I shot his fellow of the self same flight, the self same way, with more advised watch, to find the other fourth, and by adventuring both, I oft found both. I urge this childhood proof, because what follows is pure innocence. I owe you much, and like a wilful youth, that which I owe is lost. But if you please to shoot another arrow, that self way which you did shoot the first, I do not doubt, as I will voice the aim, or to find both, or bring your latter hazard back again, and thankfully rest debtor for the first. एंड दिस पैरा इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बसेनियो एक एग्जाम्पल दे रहा है अपनी चाइल्डहुड इनोसेंस के बारे में। वो एक और चीज़ से बताना चाह रहा है एंटोनियो को, जो कि एंटोनियो आगे जाके समझ नहीं पाता है। सो इसमें बसेनियो बोल रहा है कि जब बसेनियो छोटा था, व्हेन ही वाज यंग, तो उसके पास एक एरो और शाफ्ट होता था। तो जब भी वो उस एरो को अपना अपना एरो खो देता था, तो क्या करता था, वो एक और एरो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ फेंकता था, और कभी कभी उसको वो वाला एरो मिल जाता था जो उसने पहले लॉस किया था, और वो वाला एरो भी मिल जाता था जो उसने अभी अभी जस्ट फेंका था। और कभी कभी ये होता था कि उसको दोनों ही एरो नहीं मिल पाते थे, और या तो कभी होता था उसको वो वाला एरो जो उसने शूट करा था सेम डायरेक्शन में वो मिल जाता था, लेकिन जो उसका खोया हुआ एरो था वो लॉस ही रह जाता था। तो इससे क्या बताना चाह रहा है, वो इसलिए ये बताना चाह रहा है कि एंटोनियो ने उसको जो पहला वाला लोन दिया है, हो सकता है वो उसको वापस कर दे अगर एंटोनियो उसको एक और लोन दे दे, और हो सकता है वो दूसरा वाला लोन उसको वापस दे दे, लेकिन पहला वाला लोन अभी भी बचा के रखे। In other words, he is trying to say that when he will be going to Belmont, so that time he needs a loan so that he could be represented as a suitor to Portia, and when he marries Portia, then he will be able to either give the first loan or the second loan, or both the loans together.
So this seemed a little bit confusing to Antonio. So Antonio says, "You know me well, and herein spend but time to wind about my love with circumstance, and out of doubt you do me now more wrong in making question of my uttermost. Then if you had made waste of all I have, then do but say to me what I should do, that in your knowledge may by me be done, and I am pressed unto it, therefore speak." So here Antonio says that Bassanio is wasting his time in the matter by speaking in a roundabout the way. It means he is beating around the bush. मतलब वो उस पॉइंट में नहीं आ रहा है जो बताना चाह रहा है. एंटोनियो ये भी बोलता है बसेनियो को कि दैट यू आर डाउटिंग मी वेदर आई विल हेल्प यू और नॉट, एंड दिस इज रियली हर्टिंग मी. और वो ये भी बोलता है कि इवन इफ Bassanio waste all my wealth, he will not say even a single word, because Bassanio was like the best friend of Antonio. तो इसमें एंटोनियो बोलता है कि चलो वो चीज़ बता दो जो तुम चाहते हो कि मैं करूं, और मैं वो कर भी दूंगा, एंड आई एम रेडी टू डू इट. Now Bassanio comes to the point and tell. In Belmont is a lady richly left, and she is fairer and fairer than that word of wondrous virtues. Sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued to Cato's daughter Brutus Portia, nor is the white word ignorant of her worth, for the four winds blow in from every coast. Renowned suitors and her sunny locks hang on her temples like a golden fleece, which make her seat of Belmont Colchis strand, and many Jasons come in quest of her. O my Antonio, had I but the means to hold rival place with one of them, I have mine presages me such thrift, that I should questionless be fortunate. तो बसेनियो फाइनली वो चीज़ रिवील कर ही देता है. वो बताता है बेलमोंट में एक लेडी है हु हैज़ इनहेरिटेड ऑल द वेल्थ फ्रॉम अ फादर, एंड शी इज़ ब्यूटिफुल, इवन ब्यूटिफुल मोर दैन द वर्ड ब्यूटिफुल. वो बताना चाह रहा है वो इतनी सुंदर है कि ब्यूटिफुल वर्ड से भी ज़्यादा सुंदर है वो. शी हैज़ वंडरफुल क्वालिटीज़, एंड earlier when he visited Belmont, so he was getting silent speeches of love, and her name is Portia, in no way inferior to Cato's daughter Brutus Portia. अब Cato's daughter Brutus Portia कौन है? So Portia is here compared to Portia in Julius Caesar, who was a daughter of Cato, a Roman statesman and wife of Brutus, the leader of conspiracy against Julius Caesar. तो बसेनियो बताना चाह रहा है कि Portia is no way inferior to the Portia which is in Julius Caesar. तो Julius Caesar में जो Portia थी, she was a daughter of Cato, who was a Roman statesman. And जो ये line है, nor is the word ignorant of her birth, for the four winds blow in from every coast. So here Bassanio is trying to say that the entire world knows her merit and ability. एंड जिस तरह हर प्लेस से हर डायरेक्शन से विंड ब्लो करती है, उसी तरह वो सारे के सारे सूटर्स उससे मिलने आते रहते हैं हर डायरेक्शन से. एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन अ टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट कॉल्कस स्ट्रैंड. अब इसमें जो गोल्डन फ्लीस है इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है. आई विल गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस स्टोरी. The reference is made to the ancient Greek legend. Fleece refers to the crop of wool of a sheep or ram. A famous hero called Jason, with his companions, the Argonauts, went on a dangerous voyage to the Colchis on the east coast of the Black Sea in search of the golden fleece, which was fastened to an oak by the local ruler, and the fleece was guarded by a dragon. Jason obtained it with the help of his wife Medea. Golden fleece यहाँ पर एक शीप को कंसिडर किया गया है जिसका जो पूरा वूल था वो गोल्ड से बना था. एंड हेयर इन द स्टोरी द हीरो इज जेसन, एंड ही with his companions the Argonauts went on a dangerous voyage, and वो voyage थी कॉल्चोस जो कि ईस्ट कोस्ट था ब्लैक सी की तरफ. एंड वो गोल्डन फ्लीस के ही सर्च में जा रहे थे वहाँ पर. लेकिन जो फ्लीस थी शी इट वॉज गार्डेड बाय ड्रैगन. तो जेसन इतना स्ट्रॉन्ग था एंड ही वॉज वेरी वाइज कि उसने अपनी वाइफ मीडिया की हेल्प से उस गोल्डन फ्लीस को ड्रैगन की रूल से बचा लिया. सो इसी में जो ये लाइन है हैंग ऑन अ टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस, इसका मतलब पोर्शिया के जो फोरहेड में जो गोल्डन हेयर है वो गोल्डन फ्लीस की तरह है. मतलब जो गोल्डन फ्लीस है वो उसके ब्राइट गोल्डन हेयर से कंपेयर किए गए हैं. विच मेक्स द सीट ऑफ बेलमोंट कॉल्कस स्ट्रैंड. मतलब उसका जो हाउस है बेलमोंट में उसको कंपेयर कर रखा है कॉल्कस से जहाँ पर गोल्डन फ्लीस रहती थी. एंड मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर. अब जेसन है, जेसन रेफर कर रखा है सारे सूटर्स को, तो बहुत सारे जेसन्स उससे मिलने आते हैं, उसके सर्च में आते हैं, मतलब सूटर्स. O my Antonio, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind presages me such thrift that I should questionless be fortunate. तो बता रहा है अगर मैं एक बार बेलमोंट चले जाता हूँ और उन बाकी सूटर्स का एक राइवल बन जाता हूँ, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग है कि मैं सक्सेसफुल होके ही आऊँगा. एंड सर्टेनली ही विल बी द लकी पर्सन टू विन हर.
And here comes the last para. Antonio, thou knowest that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity. To raise a present sum, therefore go forth. Try what my credit can do in Venice. Can in Venice do that shall be racked even to the uttermost to furnish thee to Belmont, to fair Portia. Go presently inquire, and so will I. Where the money is, and I no question make to have it of my trust or for my sake. So because Antonio's ships are still at the sea, तो वो बताता है कि all his wealth is invested in the business and neither he has money nor he has any goods so that he could provide him with a loan. सो एंटोनियो बसेनियो को बोलता है कि मेरी रेपुटेशन देखते हैं क्या काम करती है वेनिस में, तुम अपने ताकि जिससे कि तुम अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेच कर सकते हो, लोन मांग सकते हो किसी से, तो तुम मेरा मैक्सिमम बार नेम लेना मेरा, बिकॉज एंटोनियो वॉज ऑल्सो अ मनी लेंडर who provided money to the people without taking interest. एंड एंटोनियो ये भी बोलता है बसेनियो को जो भी तुम्हें चीज़ें जो नेसेसरी है बेलमोंट जाने के लिए ताकि तुम पोर्शिया को अपनी प्रिंसेस बना सको, अपनी वाइफ बना सकते हो, तो उसके लिए जो भी तुम्हें चाहिए वो ढूंढ के आओ. एंड ही ऑल्सो सेड दैट तुम किसी से मनी बोरो करो, किसी मनी लेंडर से मनी बोरो करो. And Antonio has no doubt that he will be able to borrow money either because of his business credit or an account of his personal surety. And now the scene ends. So this I have completed Act 1 Scene 1. Thank you.